नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। सभी दोस्तों को विनोद राठी की ओर से सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं आपके बीच एक छोटा सा अपने कार्यों का एक वीडियो साझा करने वाला हूं, जो कि ENI दिल्ली वालों ने जिसका फिल्मांकन किया और हैप्रिक केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर वालों ने जिसका कि वीडियोग्राफी करवाई। धन्यवाद ENI की टीम का और हैप्रिक के सभी स्टाफ का कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने हमारे काम को इस प्रकार से साझा किया। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम आपको अपने जड़ी बूटी कार्यों का एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाले हैं। तो चलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। Global warming affects many high altitude medicinal plants, making cultivation challenging for mountain farmers. However, the High Altitude Plant Physiology Research Center at Garhwal University in Uttarakhand is making significant strides. The center researches rare plants and provides farmers with research seeds and plants, enabling profitable cultivation. So let's explore how this research center is preserving high altitude plants and improving farmers' lives. Located in Srinagar city of the northern state of Uttarakhand, the High Altitude Plant Physiology Research Center under HMB Garhwal Central University has been a beacon of innovation for nearly 40 years, focusing on the challenging cultivation of medicinal plants. In these cutting-edge research labs, a dedicated team of students and researchers conduct in-depth studies on various plant species. Rigorous testing and experimentation are undertaken to unlock the secrets of successful medicinal plant cultivation. Presently, around 40 students are immersed in researching mountainous plants, striving to conserve endangered medicinal species through groundbreaking research and innovation. Their efforts aim to preserve these valuable plants and provide substantial benefits to farmers, fostering a sustainable and profitable agricultural future. Our vision of Institute is that to disseminate the information of high altitude medicinal plants in the form of research as well as extension activities to the farmers. So basically what we do, we actually cultivate the medicinal plants and conserve them in vast area or in vast population so that we can disseminate those medicinal plants to the farmers field. Basically we can say our vision is to from lab to land. The research center boasts state-of-the-art laboratories and a sophisticated glass house, where advanced cultivation techniques like aeroponics, geoponics, and hydroponics are employed. This glass house features precise temperature control, enabling the successful growth of a wide variety of plants. The center periodically distributes these cultivated plants and herbs to farmers at no cost, accompanied by comprehensive guidance on effective cultivation practices. This support ensures farmers can achieve optimal yields and enhance their profitability, making a significant impact on their livelihoods and promoting sustainable agricultural practices. ये तो हम प्रोफेशनल भी लोगों को तैयार करते हैं, साथ साथ में हम ग्रास रूट लेवल पे भी जो है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके साथ भी हम काम करते हैं, जिससे कि वो मोटिवेट रहें, उनको तकनीकी ज्ञान की जानकारी रहे। साथ में उनको ये भी बताते हैं कि आपको कोई प्रोड्यूस अगर आपने तैयार कर लिया है तो उसकी मार्केटिंग आप कहाँ कर सकते हैं, और उससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो जो कंपनियां हैं उनको क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल जाता है, साथ में उनका पैसा जो गांव वालों के पास जाता है उनको एक लाइवलीहुड का उनका ऑप्शन मिल जाता है अतिरिक्त उनकी कृषि के अलावा। The efforts of the High Altitude Plant Physiology Research Center are significantly benefiting the farmers who cultivate in high mountain regions. Let's meet a farmer from Pauri, Garhwal, Uttarakhand, who with the help of Research Center began cultivating medicinal plants and is now earning substantial profits. In the picturesque mountains of Pauri Garhwal lies the quaint village of Nola Baiswara, home to Vinod Kumar Rathi. For the past 20 years,
Vinod has been farming at an altitude of about 2,500 meters. With the invaluable assistance of the High Altitude Plant Physiology Research Center, he has established a thriving nursery, cultivating medicinal plants such as kutki and kuth on a large scale. This strategic shift to medicinal plant cultivation has transformed Vinod's financial landscape, earning him an additional $8,500 USD to $9,500 USD annually. His success story underscores the profound impact of innovative agricultural practices and dedicated research support, significantly enhancing his livelihood and setting a benchmark for other mountain farmers. हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा हमें जड़ी बूटियों की खेती की तकनीकी वैज्ञानिक जानकारियाँ दी गई कि तुम्हारे यहाँ पे इतनी सुंदर क्लाइमेट है, यहाँ पे लगभग 2500 मीटर हाइट है और ये हिमालयन रेंज में आता है, इसके पीछे पूरा हिमालय है। तो उन्होंने हमें तकनीकी जानकारियाँ दी कि मतलब कि तुम्हारे यहाँ इस हाइट में, इस मिट्टी में जड़ी बूटियाँ ये कुटकी, कोट, अतीस, जटामासी बहुत अच्छी हो सकती हैं। और हमने मेहनत की, उन्होंने सपोर्ट किया और हमने यहाँ पे अपने जो खेतों में दिन रात मेहनत करके और अच्छा हम आज मुनाफा कमा रहे हैं अपनी जड़ी बूटियों से। उस समय से हमारी स्थिति में कुछ परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है। Like Vinod Kumarrathi, many other mountain farmers have also reaped significant benefits from the support provided by High Altitude Plant Physiology Research Center. The commendable efforts of this research center are not only driving agricultural innovation, but also playing a crucial role in empowering farmers. By integrating cutting-edge research with practical support, the research center is transforming lives and fostering sustainable development in the high-altitude regions.